और आज हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद ये डिस्कस करना जरूरी है व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ओके, दिस इज ओमेगा। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? ये एंगुलर वेलोसिटी जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, वी टॉक अबाउट ओमेगा, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट divided by time. This is the definition of angular velocity omega. So if we denote angular velocity as theta, that is in general omega is equals to theta by t. But the angular velocity may be of two types. ये दो तरह के होते हैं, क्योंकि पर यूनिट टाइम पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हर टाइम पे एक ही नहीं होता है, वो सेम नहीं होता है हर टाइम पर। जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच एंड इंडिविजुअल टाइम विल बी सेम, देन इट विल कॉल्ड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी मे बी ऑफ यूनिफॉर्म, मे बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ऑल्सो। इफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट विल बी एंगुलर नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। सो द ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी इज नॉट द जनरल एक्सप्रेशन. This is roughly we can say angular displacement divided by time, but this is what we call is actually the angular average angular velocity. ये जो average angular velocity है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए सही है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तब ये थीटा डिवाइड बाई टी नहीं होगा, ये डी थीटा बाई डी टी होगा. सो एंगुलर वेलोसिटी आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज यू कैन से uniform angular velocity, uniform angular velocity. ये एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, दैट इज पर यूनिट टाइम थीटा विल बी सेम. सो हियर ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, then this omega is nothing but the average of angular, the average value of omega for angular velocity, uniform angular velocity. Actually we'll discuss about the average angular velocity, because for uniform angular velocity we need not know the velocity, angular velocity for each and every time, because throughout the whole motion, थ्रू द होल सर्कुलर मोशन उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होते हैं कांस्टेंट होते हैं. सो वी हैव टू टेक एवरेज ओनली. सो जब हम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम लोग एंगुलर एवरेज वेलोसिटी निकलता है, और ये एंगुलर एवरेज वेलोसिटी जो है वो है डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी. सो ये है एंगुलर वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन. But for non-uniform motion, non-uniform circular motion, if we talk, it may be of uniform circular motion. Instead of angular velocity, it is better to write that uniform circular motion. Okay, uniform circular motion ये ज़्यादा सही होगा. और ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम क्या करता है, मतलब एंगुलर इंस्टेंटेनियसली करना है, और ये क्या होगा, ये शॉर्ट टाइम इंटरवल से होगा, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, और ये डेल थीटा बाई डेल टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी होगा. इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एक्चुअली डेरिवेटिव. सो द कॉन्सेप्ट इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिनियर मोशन ऑल्सो. ये जो कॉन्सेप्ट होता है
वेलोसिटी का जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है वो सेम है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन हियर वी हैव यूज्ड सर्कुलर मोशन। So the variables will be angular velocity, these are the axial vectors. So these all are the axial vectors. If we talk about these are the vectors, then we can write it like this. Okay. So these are the angular variables. So the vectors are axial vectors and its directions are planes perpendicular to the plane. If this is the path of the circular motion, then and this is the axis, then omega, theta, all are towards the axis or along the axis, and it is away from the plane. Okay, for the rotation, anti-clockwise rotation of the particle, it will be like this. So this is the angular velocity, and now we have to discuss the relation between this angular velocity and the linear velocity. ये हर बार हम लोग ये निकलता रहेगा कि जो एंगुलर वेरिएबल्स है उसके साथ लिनियर वेरिएबल्स का क्या रिलेशन है। जैसे पहले टॉपिक्स में जब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात किया था, तब हमने बताया था द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लिनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड द रिलेशन वाज लाइक दिस। वी हैव द रिलेशन ऑलरेडी that ds is nothing but r d theta. This is the relation between, this is the linear displacement and this is the angular displacement. So if we take the derivative or if we divide it by dt, then we will get ds by dt is equals to r into d theta by dt, and this ds by dt is nothing but v, that is the linear velocity, which is equals to r omega. D theta by dt is the angular velocity. So this is the scalar relation. This is simple scalar relation between the linear velocity and the angular velocity. The linear velocity is equals to radius into angular velocity. But in general, if we talk the vector relation, what will be the vector relation? जैसे कि स्केलर रिलेशन के लिए दिस स्केलर रिलेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर भी जब वेक्टर रिलेशन निकालना होगा तो वेक्टर रिलेशन से स्टार्ट करना होगा। तो ये जो है ds इक्वल्स टू आर डी थीटा, उसका वेक्टर रिलेशन क्या था? ds वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस आर, ये था हमारा वेक्टर रिलेशन। तो जब ये dt डिवाइड करूंगा इसके साथ ds बाई dt, इट विल बी डी थीटा बाई dt क्रॉस आर। So this is v, ds by dt is nothing but v, so it will be omega cross r. So this is the relation between v omega and r. और ये ओमेगा, जब ये रिलेशन ऐसा होगा कि जो ओमेगा होगा वो एक्सिस के थ्रू होगा, और ये जो प्लेन है अगर ये पार्टिकल ये प्लेन में घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन ये प्लेन में होगा अगर, ओके, तो ये है r और ये है v, और इस प्लेन से जो आउटवर्ड्स आएगा ये होगा ओमेगा। तो v क्या होगा? ये है r होगा, ये इस वेक्टर r वेक्टर होगा ये, और ये जो होगा वो v वेक्टर होगा, क्योंकि ये अलॉन्ग द टेंजेंशियल होगा। सो v क्रॉस ओमेगा क्रॉस जो r होगा वो v होगा। ओके, सो दिस इज द प्लेन पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ v omega and r. So this is actually the vector relation which can be obtained from the vector relation of the displacement. This is the vector relation between the angular displacement and the angular linear displacement. So from here we can write down this relation, that is the relation between the linear velocity and the angular velocity. But this is the vector relation and this is the scalar relation. Please keep in mind. And here the direction of the omega is outwards from the plane, direction of the v is along the tangent, and the direction of r is nothing but the position vector of the particle at an instant. Okay, thank you.